ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ತರಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆಗಮಾರ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಪೂರ್ವೇ ಘಂಟಾನಾಂ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಸ್ವಾನಾಂಜನಂ ಇತಿ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾನ್ನವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯೋ ನೇತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾ ಸರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯೋ ವಿಪ್ರಲಂಬ ವಿಪರೀತಮತಿ ಪ್ರಭೂತಾಂ ವಾದ ನಿರಸ್ಯ ಕೃತವಾನ್ ಭವಿತತ್ವವಾದಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಿರಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಂ ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿವರ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ. ಅದ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಯೋಂ ಗುಣವಿಶೇಷಣವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಶುಭತೀತೋ ಸಕಲಭಕ್ತಮಹಾಜನಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯವೀರ್ಯಾಭಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೌರ್ಣಿಮಾಂಗಭೂತ ರಮಾಸಮೇತ ವೀರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕಲ್ಪೋಕ್ತಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಚ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಮುಖೈಃ कारयिष्ये ತದಂಗ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟ ಗಣಪತಿರಾಜೋ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಪ್ರಸೂನಾಯ ನಾಮ್ಯಾಃ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಅಶ್ವಿನ್ ವೆಂಕಟ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಧನ್ವನ್ ಮಾರುತಿ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಮಣಿಮಾರನ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ನಾಥಸ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಂ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮಣಿಮಾರನ್ ನಾಮ್ಯಾಃ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಋಷಿ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಶ್ವೇತಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಶ್ರುತಿ ನಾಮ್ಯಾಃ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಪೂರಾಣಂ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಜಯಶ್ರೀ ಶೇಖರನ್ ನಾಮ್ಯಾಃ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಅದಿತ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಅಂಜನಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಪುರಟಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಮ್ಯಾಃ ತಿರುವೋಣಂ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಶ್ರವಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತಮೂರ್ತಿ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಮ್ಯಾಃ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಮೀನಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ವೀಣಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಭರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಗೀತಾರಾಣಿ ಮೊಹಂತಿ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸುಶಾಂತ್ ಮೊಹಂತಿ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ನಮ್ರತಾ ಮೊಹಂತಿ ನಾಮ್ಯಾಃ ಅಂಜನಾ ಮೊಹಂತಿ ನಾಮ್ಯಾಃ ಕ್ಯಾಮಡನ್ ಕಾರ್ವರ್ ನಾಮ್ಯಾಃ ಅಮಿಲ್ ಕಾರ್ವರ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಆನಂದ ಪರಮಹಂಸ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ರಚನಾ ಪರಮಹಂಸ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸೋಹನ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಶೈಲಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಆಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯಾಃ ಪುಬ್ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ನಿಖಿಲಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಕೃಷೈ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಅದ್ವೈ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಅನುಷಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಅಂಜನಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಶ್ರುತಿ ನಾಮ್ಯಾಃ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಉತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಮಿತ್ರಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಸ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಜಾತಾಯಾಃ ಶ್ರೇಯಾ ನಾಮ್ಯಾಃ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ತದನಂತರ ಯಜಮಾನಸ್ಯ
हरितगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे जातस्य श्रीनिवासनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातायाः पद्मजानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातस्य गुरुप्रसादनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य नितिन्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य नरेन्द्रशर्मानामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातायाः प्रभावतीनाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे जातस्य देवेशर्मानामधेयस्य तदनन्तर यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य उपानक्षत्रे जातायाः दिव्यालक्ष्मीनाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे जातस्य आरव शर्मानामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातायाः महिष्मतीनाम्न्याः सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य प्रेमपिळ्ळैनाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातायाः रोहिणीपिळ्ळैनाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातायाः देवन्पिळ्ळैनामधेयस्य उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे जातस्य ध्रुवपिळ्ळैनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातायाः लीनीनाम्न्याः अशोकनामधेयस्य उत्तरानक्षत्रे जातस्य शबरीशनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य महदेवन्नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य बालकृष्णन्नामधेयस्य पुरनक्षत्रे जातस्य सतीनाम्न्याः पुरानक्षत्रे जातायाः सुरजित्नामधेयस्य मकानक्षत्रे जातस्य मिथुन्नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य लीशानाम्न्याः पुष्यानक्षत्रे जातायाः राजीवनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य वाणीजयन्नाम्न्याः तिरुवोणनक्षत्रे जातायाः सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य मुत्करसगोत्रोद्भवस्य निवेदितानाम्न्याः अलीशानाम्न्याः अरोरानाम्न्याः विभूनाम्न्याः निहारनामधेयस्य पुष्पानाम्न्याः नारायणीनाम्न्याः सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य बलिशेट्लगोत्रोद्भवस्य शतभिषानक्षत्रे जातायाः प्रमोदा मथुरूनाम्न्याः विशाखानक्षत्रे जातायाः रत्नानाम्न्याः पुष्यानक्षत्रे जातस्य अमितनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातायाः मीनानाम्न्याः सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य रामस्वामी रङ्गराजन्नामधेयस्य चित्रानक्षत्रे जातायाः मित्रानाम्न्याः हस्तानक्षत्रे जातायाः श्रेयानाम्न्याः सह कुटुम्बानां तदनन्तर यजमानस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य अनन्तयङ्गारनामधेयस्य माधुरीनाम्न्याः विशाखानक्षत्रे जातस्य नवनीतनामधेयस्य सह कुटुम्बानां सकलभक्तमहाजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुष्य आरोग्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकादि नवनवजनित तापत्रय निवारणार्थम् अलक्ष्मी निरसनद्वारा स्थिरलक्ष्मी कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थम् उद्योगक्षेत्रे धन कनक वस्तु वाहन सकल अष्ट ऐश्वर्यसिद्ध्यर्थं समस्त सन्मांगल्यता सिद्ध्यर्थं विशेषतः लोके स्थिता कृमि कीट पक्षी सरीसृप जलचरादिजनित नानाविध रोग निवारणपूर्वक धन्वन्तरी वैद्यनाथस्वामिनः अनुग्रहेण वेदोक्त आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः समस्त सन्मांगल्यता सिद्ध्यर्थं रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः कल्पोक्त पूजा पूर्वक अष्टोत्तरशतनामार्चनानि आचार्य प्रमुखैः कर्म कारयिष्ये। ओम आगमार्थं देवानां गमनार्थं रक्षसां कुर्वे घण्टारं तत्र देवता वानराञ्चनम् इति घण्टानादं कृत्वा नारायणाय परिपूर्णगुणान्नवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विविधासुरसौख्यदुःखासत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। Namaste dear devotees. Now we are going to do the Achamanam. So if you are ready, just take a spoon of, glass of water and spoon in that. So if you don't know how to do it, please repeat after priest.
ओम केशवाय स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः जनार्दनाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः परमस्य परब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सावित्रवरेण्यं भर्गो ओम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम. Dear devotees, take some flower petals in your hand, or if you have akshata, take it on your left palm, close with your right palm, place it on your right side thigh. So if you don't know, please look at priest and repeat after me. First, all of you tell your gotram, your name, your birth star, as well as family members' name and birth star, and repeat after me. Mama मम Upata उपात्त Samasta समस्त Durita दुरिता Kshayadvara क्षयद्वारा Parameshwara परमेश्वर Paripurna परिपूर्ण Kripa कृपा Kataksha कटाक्ष Siddhyartham सिद्ध्यर्थम Dharma धर्म Artha अर्थ Kama काम Moksha मोक्ष Chaturvida चतुर्विधा Punya पुण्य Purushartha पुरुषार्थ Siddhyartham सिद्ध्यर्थम Sakala सकल Devata देवता Anugraha अनुग्रह Siddhi सिद्धि Purvaka पूर्वक Udyoga उद्योग Kshetre क्षेत्रे Dhana धन Kanaka कनक Vastu वस्तु Vahana वाहन Sakala सकल Ashta अष्ट Aishwarya ऐश्वर्य Siddhyartham सिद्ध्यर्थम Vidyarthinam विद्यार्थिनां Vidya विद्या Parangata पारंगता Siddhi सिद्धि Purvaka पूर्वक Aunatya औन्नत्य Sthana स्थान Phalata फलता Siddhyartham सिद्ध्यर्थम Visheshatah विशेषतः Rama Sameta रमा समेत Veeravenkata वीरवेंकट Satyanarayana सत्यनारायण Swaminah स्वामिनः Anugraha अनुग्रह Siddhyartham सिद्ध्यर्थम Poornima पौर्णिमा Angabhuta अंगभूत Sakala सकल Bhakta Mahajanan भक्त महाजनाने Uddishya उद्दिश्य Devata देवता Sannidho सन्निधौ Rama Sameta रमा समेत Veeravenkata वीरवेंकट Satyanarayana सत्यनारायण Swaminah स्वामिनः Kalpokta कल्पोक्त Pujanancha पूजनञ्च Acharya आचार्य Pramukaihi प्रमुखैः Karayishe कारयिष्ये Swayancha Karishe. स्वयं च करिष्ये. Take the takshata in your right hand, pour some water and leave it in the Arghya Patram. Now we are going to do the Ganapati Pooja. First we are going to do the Guru Prarthana. Take some akshata in your hand. Om Lakshmi Narayanam Munde Tadbhakta Pravarohiyaham Srimadananda Tirthakyo Gurustam Chanamamyaham Kuladevatabhyo Namo Namaha Gramadevatabhyo Namo Namaha Gramadhidevatabhyo Namo Namaha Sarvebhyo Devebhyo Namaha Sarvebhyo Brahmanebhyo Namo Namaha. All of you just remember your Kuladevata and offer the akshata in feet of Lord Satyanarayana Swami. Now once again hold some akshata or flower petals. If you have flower petals you can hold that. Now we are going to invoke the Lord Ganapati into the Haridra Bimbam. Om Gananam Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinamopavishnavastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvanno Devessedasadanam Bhuho Bhuvaha Suvaha Bhurbhuva Suvaha Mahaganapatim Chandramandalate Avahya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Shashakti Hastam Asmin Haridra Bimba Madhye Kumbha Madhye Avahayami Stapayami Pujayami Avahita Mahaganapataye Namo Namaha प्राणप्रतिष्ठापनाख्यं च कर्म करिष्ये. अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा ऋषयः प्रकृतिस्सामाशीर्वाणि छन्दांसि प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः. ओम असो नीते पुनरस्मासो चक्षुः पुनः प्राणमिहनो देहि भोगम्
जोपश्येम सूर्यां प्रचलन्ते मदया आनस्वस्ति हृदिस्था एव ते प्राणाः हृदिजीवरदार्ताः हृदीन्द्रियाणि संयम्य हृदिवायुप्रतिष्ठितः यालावाशेषासाः क्रोरं शमं सः महागणपतेः प्राणाः इह स्थिताः महागणपतेः इन्द्रियाणि इह स्थितानि महागणपतेः जीवाः इह स्थिताः रक्ताम्बोधिस्तपोतो लसुतरणसुरो जातिरूढाः क्राब्जीः पाशं कोदण्डमिक्षोद्बदनमपेक्षं पञ्चबाणान् बिभ्राणा सिक्नपाला त्रिनिर्लसितापि नवक्षोर्हाढ्यां देवी बालार्कवर्णा पौतुसुखकरिप्राणशक्तिपराणः भूस्वामिन् जगतानाथ यावत् पूजावसानकं तावत् सम्प्रीतिभावेन हरिद्राबिम्बमध्ये कुम्भमध्ये सुस्थिरो भव सुस्थिरो भव सुस्थिरो भव आवाहितमहागणपते नमो नमः मनसोद्देष्टः प्रार्थनां समर्पयामि. Offer those akshata to the Lord Ganapati. Now we are going to do the Dwadasha Namarchana for Lord Ganesha. Please repeat after me. Om Sumukaya Namaha. Om Sumukaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Om Lambodaraya Namaha. Om Lambodaraya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Om Palachandraya Namaha. Om Palachandraya Namaha. Om Kumaragurave Namaha. Om Kumaragurave Namaha. Om Sarvasiddhi Om Sarvasiddhi Pradayakaya Pradayakaya Shriman Mahaganapataye Mahaganapataye Namo Namaha. Namo Namaha. Dwadasha Nama Pujanancha Samarpayami. Now hold some akshata in your hand. आवाहित महागणपते नमो नमः षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये. महागणपते नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि आभरणानि समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपः ओम वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां ज्योतिःशुक्लश्च तेजश्च देवानां सततं प्रियः प्रभाकरो महातेजो दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. आवाहित महागणपते नमो नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि नैवेद्यार्थे क्रमुकताम्बूलसहित पक्वा कदलीफलान्निवेदनं निवेदयामि कृतं त्वा सत्येन वर्षिञ्चामि अन्तःशर्तिभूतेषु गुहायां सर्वतोमुखः त्वं यज्ञस्थं षट्कारः त्वं विष्णुपुरुषोत्परः अमृतोपसरणमसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि गण्डूषं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणाञ्जलिं च समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च करिष्ये. ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्. आवाहित महागणपते नमो नमः चरणारविन्दयोः सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणाञ्जलिं समर्पयामि. Dear devotees, please do the prayer. Now priest is going to do the aarti for Lord Ganesha. Om Nishati Ganapade Ganesha Swama Ahurve Pratamam Kavina Narate Tutkriyate Kinjanare Mahamarkam Madhavan Chitramasya Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Dhanti Prachodayat. Jai Bolo Mahaganesha Bhagavan Ki Jai. लाभाय क्षेमाय पुनः आगमनाय च महागणपते नमो नमः यथा यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि. Dear devotees, so without obstacle we are going to finish this puja. So take the blessings from Lord Ganapati. In front of the Lord Ganapati you did the archana with akshata. Take those akshata as a blessing and put on your head. ओम महागणपते नमो नमः निर्विघ्नं कुरु निर्विघ्नं कुरु निर्विघ्नं कुरु. अथ कलशाराधनाख्यं च कर्म करिष्ये.
ओम महीद्यो पृथिवीचान इमं यज्ञं मीमिक्षतां पिबृतां नो वरेमभिः येन तोकायतनायाय धान्य अम्बीजं महद्वे अक्षीतम् अस्मभ्यं तद्दत्तनयध्व इमा हेरादो ओ विश्वायसो भागम् ओषादय संवादन्ते सोमे येन सह राज्ञः यस्मै ईक्ष्णाति ब्राह्मणस्तं रा आजन्पारयामसि आकलशे एष दावतिष्येन वर्मविगा आहते अभिद्रोणाकनिकृदते तन्तुं तन्मन्रजा सोभान्मन्वेः ज्योतिष्पतवतो रक्षतिया कृतान् अनुल्बणं वायतजोगो वामपो मनर्भवजनया दैव्यं जनम् इमं मे एकङ्गेयमुने सरस्वते शतद्रिस्तोमं सततापरुष्ण्या असिक्नियामार्तदेवतस्त्यार्जी ईकीये शृणुत्या श्रोमाय तपो अष्पवित्रं विदातं शोचं तो अस्य तन्तावो व्यस्तिरन् अवं तस्य पवीतारामाशवो अद्यस्पृष्ट मदे तिष्ठन्ति चेतासा स हि रत्ना आनिदाशिषे स्वाति सवितापगाः तं भागं चित्रमीमहे गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषिणीं ऐश्वरेगं सर्वभूतानां तामिमोपक्वये श्रियम् अर्चतः प्रार्चतः प्रियमेधासो अर्चाता अर्चन्तु पुत्रका उत पुनर्दुष्मर्चता आयाने ते परायाणे दूर्वा आरोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरी एकानि समुद्रस्य ग्रहा इमे अश्वत्थेवो अनिषदानं भरणेवो अवस्तिष्ठता गोपाजयित्किल आसतयत् सनमात पूरोषं पूर्णादर्विपरा आपदसुपो ओर्णा पुनरापात रस्नेम विक्रीणावहानिशमूर्जं शतकृतो या पलिनीर्या आपला आपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो अमुञ्चन्तु गुंहासः ओं तपो अष्पवित्रं वितातं शोचं तो अस्य तन्तावो व्यस्तिरन् अवं तस्य पवीतारामाशवो अद्यस्पृष्ट मदे तिष्ठन्ति चेतासा तत्त्वयामिशुनश्य पूर्णसृष्टिवे कलशमध्ये महावर्णस्यावाहने विनियोगः ओं तत्त्वा आयामि ब्रह्माणा वन्दामानस्तदाशा आस्ते यजामानो हविर्वेः अहे एळमानो वरुणेह बोद्युरोषं समान आयुः प्रमोषेः भूर्भुवस्वः महावरुणं चन्द्रमण्डलात् आवाक्य सश्रीकं सपरिवारं साङ्गं सायुधं सुशक्तिहस्तं कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं कलशस्य मुखे विष्णो कण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले चतुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षोत्सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदोत यजुर्वेदो सामवेदो ह्यतर्मणः अंगैष सहिता सर्वे कलशामुषमाश्रिताः शान्ति पुष्टिश्च गायत्री सावित्री च सरस्वती आयान्तु देवकार्यार्थं दुर्दक्षयकारकाः सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदाः गङ्गे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहित कलशाभिमानि देवताभ्यो नमो नमः मनसोद्दिष्टः प्रार्थनां समर्पयामि. Dear devotees, take some akshata or flower petals in your hand. सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सोत्पलाद्भीत्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटिरचूडां बसितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि. विष्णो सङ्गतिकारिणी हरजटाजूटाटवीचारिणी प्रायश्चित्तनिवारिणी जलकणैः पुण्योगविस्तारिणी भूभृत्कन्दरतारिणी निजजले मज्जज्जनोत्तारिणी श्रेयस्वर्गविहारिणी दिशतनो गङ्गामनोहारिणी. हे गंगे तव कोमलांग्रिनलिनं ब्रह्मोरनी वीरसते काञ्चीदामतनोदरङ्गनकुचौ व्याकीर्णहारं वपुः सन्मुद्राङ्कितकङ्कणामृतकरं स्मेरत्स्फुरत्कुण्डलं सारङ्गाक्षिजलान्नितिन्दुरचये जान्यन्ति ते न्यज्जलान्. गङ्गाभागीरथ्यै नमो नमः. अस्मिन् कुम्भमध्ये आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि. Offer those akshata to the kalasham. Now once again we are going to invoke all the devatas into the kalasham. Hold some akshata or flower petals in your hand. तत्त्वायामि शुनश्य पूर्णस्त्रिष्टिपे कलशमध्ये लक्ष्मी समेता ओम इदं विष्णुर्मेधातिर्विष्णुर्गायत्री कलशमध्ये लक्ष्मी समेत महाविष्णोः आवाहनं च करिष्ये. ओम तत्त्वा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदादे पदं समोऽर्णमस्य पागुं सुरे सत्त्वमितिता पुनः पुनन्तो यत्र धीरामनासा वाचमक्राता अत्रासका आयसख्यानि जानते भद्रेशा आं लक्ष्मीर्निहिता देवाची. Dear devotees, repeat after me. Bhurbhuvasvaha Mahalakshmi Sametam Srimannarayanam Vaikuntha Lokat Kshirasagara Madhyastat Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Shashaktihastam Asminne Bimba Madhye Kumbha Madhye Chitrapata Madhye आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि.
ओम ब्रह्मज्ञाननकलो ब्रह्मा त्रिष्टुपे सरस्वती समेत ब्रह्मणस्य आवाहने विनियोगः ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्रुचो वेद आवह सपुत्र्या उपमा अस्य विष्टाः सतस्य निमसतस्य वः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीमते धीनाममित्र्यवतो रिपीट आफ्टर मी भूर्भुवः स्वः सृष्टिकर्तारं श्री ब्रह्माणं महासरस्वती समेतं सत्यलोकात् आवाह्य सश्रीकं सपरिवारं साङ्गं सायुधं सशक्तिहस्तं बिम्बमध्ये कुम्भमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Once again hold some akshata in your hand. मानस्तोकेति कुत्सो रुद्रो जगति पार्वती समेत रुद्रस्य आवाहने विनियोगः ओम मानस्तोकेतनाये मानो आयुष्मानो गोषुमानो अश्वे ऐश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रवामितो वाधिरविष्मदसरवित्व आहवामहे ओम गौरीर्मीमाय सलिलानि तक्षत्येकापदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापादी नवापदी बभूषे ए सहस्रा अक्षर परमेव्यो ओमन्. रिपीट आफ्टर मी भूर्भुवः स्वः लयकर्तारं सदाशिवरुद्रं पार्वती समेतं कैलासलोकात् आवाह्य सश्रीकं सपरिवारं साङ्गं सायुधं सशक्तिहस्तं अस्मिन् कुम्भमध्ये बिम्बमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Once again hold some akshata. Now we are going to invoke Lord Satyanarayana Swami into the kalasham as well as into the idol. If you have the picture, we are going to invoke in that also. Hold some akshata in your hand. ओम इरा आमते ते नमते भूतं सो ओ यवसिने मरुते दशस्य व्यस्तद्दारो दासे विश्वमिन्वे दादर्तः पृथिवी भवितो ओ मयूकै शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. Oh, repeat after me. Bhurभुवः स्वः रमा समेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिनं चन्द्रमण्डलात् आवाह्य सश्रीकं सपरिवारं साङ्गं सायुधं सशक्तिहस्तं तस्मिन् बिम्बमध्ये कुम्भमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. आवाहित देवताभ्यो नमो नमः. ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये. तत्पूर्वं प्राणाप्रतिष्ठापनं च कर्म करिष्ये. ओम असूनीते पुनरस्मासो चक्षुः पुनः प्राणमिहनो देवोगं जोपश्यमसूर्यामृषन्ते मृदया आनस्वस्ति ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सत्पर्वातायिने ध्रुवं विश्वामिदं जगद्ध्रुवो राजा आमिषामयं ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं तन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. आवाहित देवताभ्यो नमो नमः. आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सम्मुखो भव अवगुण्ठितो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद. आवाहित देवताभ्यो नमो नमः. ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनं च कर्म करिष्ये. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि आभरणानि समर्पयामि गन्ध अक्षत परिमळ पत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं च करिष्ये. ओम असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो पश्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. आवाहित कलशाभिमानि देवताभ्यो नमो नमः. चरणारविन्दयोः सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणाञ्जलिं समर्पयामि. अत मङ्गलनीराजनं च करिष्ये. Dear devotees, pray to all the deities. Now priest is going to do the arati. Om Hiranyapatram Mado Purnam Dadati Madhuvyosaniti Ekada Brahmanam Upaharati Ekadeva Nijamana Ayuste Jodadati Narayanaya
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। Dear devotees, now we are going to invoke all the navagrahas. So if you have a picture in front of you, you can see that, or no problem, just hold the akshata or flower petals in your hand. You can directly offer it to the kalasham in front of you. If you have an idol, you can just offer in front of that, okay? ओम आकृष्णे नित्यस्य हिरण्यस्तूपः सविता पुरोष्णिक आदित्यग्रहस्य आवाहने विनियोगः। ओम आकृष्णे नरजा सावर्तामानो निवेशन् अमृतमर्त्यं च हिरण्येन सवितार्तेन देवो याति भुवनानि पश्यन् अग्निं दोतं वृणीमहे होतारं विषभे एषजम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रचेतसे विलुष्टामायितव्यासे ओचेमशन्तामं हृदे जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं द्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Adityagraham Chandramandalat Avahya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Sashaktihastam Tasmin Bimba Madhye Chitrapata Madhye Avahayami Stavayami Poojayami. Offer that to Lord Suryagraha's picture or in front of the kalasham. Once again, hold the akshata flower petals in your hand. Now we are going to invoke Lord Chandragraha. Om apya ayasvasame etate vishudasvamurashniyam bhavavajasya sangate. Om apsume somo abravidantar vishva animeshaja agnim cha vishasham bhuvam apasya vishve eshati gaurirmi maisalila nitakshatyeka padi dvipadi sajadashpade अष्टापादी नवापदी बभूषे सहस्रा अक्षरा परमेभ्यो ओमन्। Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Chandragraham Chandramandalat Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Sashaktihastam Tasmin Kumbha Madhye Avahayami Stapayami Poojayami. Now once again hold some akshata in your hand. Now we are going to invoke Lord Angaraka Graha or Kuja Graha. Om Divakatpati Prativya Ayam Apagumratragum Sijinvati Om Shivana Prativi Bhavanakshara Niveshani Ircha Ana Sarma Suprataha Kumaram Mata Yavate Samadam Gaha Abibarti Nadadati Mitre Ani Ekamasya Samirajana Asapurapashyanta Nihita Marato Dharani Garbha Sambhotam Vidyutkanjana Sannibam Kumaram Shakti Hastancha Mangalam Pranamyaham. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Angaraka Graham Chandramandalat Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Sashaktihastam Asmin Kumbha Madhye Chitrapata Madhye Avahayami Stapayami Poojayami. Offer that akshata to the picture or to the kalasham. Now once again hold some akshata in your hand. Now we are going to invoke Lord Buddhagraha. Om Udbuddhidvam Samana Sasakaya Samagnibindo Bhavasani Elaha Dadikra Bhagnimishencha Devi Vindra Ayato Vasenikva Evaha Idam Vishnar Vichakrame Tredanida Depadam Samo Onlamasya Bhagam Sure Sahasra Shirsha Purosha Sahasra Aksha Sahasrapan Sabhumim Shuto Vrutvatya Tishtadashangulam Priyang Gugulika Basam Rupena Pratimam Budam Somyam Somyagunopetam Namami Shashinandanam. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Buddhagraham Chandramandalat Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Sashaktihastam Kumbha Madhye Chitrapata Madhye Avahayami Stapayami Poojayami. Offer the akshata to the kalasham or in front of the Buddhagraha's picture. Now once again hold the akshata. We are going to invoke Lord Gurugraha. Om Brahaspade Adiyadarya Arha Madhyavali Pratamam Vajanesho Yadeva Yachava Sarta Prajata Dasma Sudranam Dehi Chitram
ఇంద్రశ్రేష్ఠ అనిద్రవీణాని చిత్తం దక్ష సర్వత్వమస్మే పోషం రేణామరిష్టిం తనూనాం స్వాత్మానం వాచసూదినత్వమన్నా బ్రహ్మాణా తే బ్రహ్మైజాజ్మిరే సకా ఆయసదమాదా ఆశో స్థిరమృతం శుక్మింద్రాతిష్టం ప్రజానంద్వాముపాయాహి సోమం దేవానాం చ ఋషీనాం చ గురుం కాంచన సన్నిభం వంద్యం చ త్రిషు లోకేషు ప్రణమామి బృహస్పతిం. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సమేతం బృహస్పతి గ్రహం చంద్రమండలాత్ ఆవాహ్య సశ్రీకం సపరివారం సాంగం సాయుధం సశక్తి హస్తం కుంభమధ్యే చిత్రపటమధ్యే ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. Offer that akshata in front of the collection. Now once again hold some akshata in your hand. Now we are going to invoke Lord Shukra Graha. Om Shukrante e annedyajatam te e annedvishurupe ahanidjori vasi विश्वाहि माया अवासे स्वदावो भद्राते ए पुष्यन्निहरातिरस्तु इंद्राणी माशनारीषु सुभगा अमहमश्वं नक्यस्य अपरं चन्द्रा साराते पतिष्वस्मादिन्दरुत्तारः इंद्रं वैष्णवस्प्रियवा आमहेजने एभ्यः अस्माकमस्तु केवालः हिमकन्दमणालाभं दैत्यानां परमं गुरं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Shukragraham Chandramandalate Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Shashakti Hastam Asminne Kumbhamadhye Chitrapatamadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata in front of the collection. Now once again hold some akshata. We are going to invoke Lord Shanishchara Graha. Om Shamakniragnavekkarajannastapata Suryaha Shamvato Omaturava Apasritaha Om Praja Apatena Tvajetanyanya Vishwa Ajatani Paritava Bhuva Yatka Amaste Jumastanno Astam Syamapatayorayina Yamaya Somam Sunata Yamaya Jhota Havihi Yamam Hayidno Gacchitegnido Oto Arankritaha नीलाञ्जनगिरिप्रख्यं रविसोनम्यमाकृजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Shanaischaragraham Chandramandalate Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Shashakti Hastam Asminne Kumbhamadhye Chitrapatamadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata in front of the collection. Now once again hold some akshata. Now we are going to invoke Lord Rahu Graha. Om Kaya Anachitra Abhuduti Sadavradasaka Kaya Shatishkaya Vrata Ayando Prashtira Krameda Satan Mataram Puraha Pitarancha Preswaha Param Mrutyonavare Himantamiste Svitaro Devayana Ate Chakshashmate Shumnate Te Pravimana Prajamri Irishomota Veera Ardhakayam Mahaviryam Chandraditya Vimardhanam Simhika Garbhasambhotam Tamraham Pranamamyaham. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Rahugraham Chandramandalate Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Shashakti Hastam Asminne Kumbhamadhye Chitrapatamadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata in front of the collection. Once again hold some akshata. Now we are going to invoke Lord Ketu Graha. Om Ketum Pranvanna Ketavepesho Om Arya Apeshase Samshadbirajayatah Om Sachitra Chitram Chitayantamasme Chitrakshatra Chitratamam Yoda Chandram Raim Purveram Prahantam Chandra Chandra Virganateyo Vaswa Om Brahmana Te Om Brahmajajnanam Pradamam Purastad Visemata Surucho Vena Amaha Sabutmiya Upama Asya Vishtaha Satasyeram Saschivaha Palashatum Prasankashan Taraka Grahatarakam Rodram Rudratmakam Goram Tam Ketum Pranamamyaham. Repeat after me. Adidevata Pratyadidevata Sametam Ketu Ganam Chandramandalate Avakya Sashrikam Saparivaram Sangam Sayudam Sashakti Hastam Asminne Kumbhamadhye Chitrapatamadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata in front of the collection. Now we are going to invoke the
Dikpalakas, so who are the deities of all the directions. Now once again hold some akshata in your hand. Om Agnim Dotam Ranimahe Hota Aram Vishave Esadam Asya Yasya Sukratam. Om Indra Sreta Anidravina Yetitim Daksha Surgattumasme Posham Reina Martim Tanona Am Swatmanam Vacha Sudyan Tomanna Purodigamani Devata Indram Sashrekam Samarivaram Sangam Saidam Shishakti Hastam Avahayami Stapayami Pujayami. Once again hold some akshata in your hand. Agnim Dotam Ranimahe Hota Aram Vishave Esadam Asya Yasya Sukratam. Agnedik Abhimani Devata Agnim Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Once again hold the akshata in your hand. Yamaya Somam Sunata Yamaya Johata Hamihi Yamam Ha Ignogachitagnido Ota Arankrataha. Om Dakshina Dike Abhimani Devata Yamam Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata. Once again hold some akshata in your hand. Om Poshanah Para Apara Nirajardrana Amadit Padeshtaya Saha Nairitya Dike Abhimani Devata Nirritim Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata and once again hold some akshata. Om Tattva Ayami Brahmana Mandamanastasha Aste Yajamano Havirpehe Ahe Elamano Varune Habodhirosham Samano Ayush Pramoshi. Paschima Dike Abhimani Devata Varunam Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata. Once again hold some akshata. Tamava Yuktaspraya Tushturja Mataradbhuta Avamsya Vranimahe Vayavya Dike Abhimani Devata Mahavayam Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata to the mandapam. Once again hold some akshata. Om Somo Adenam Somo Arvantabasham Somo Aviram Karmanyam Dadati Sadanyam Vidatyam Sabheyam Pitashtravanam Yodata Avdasmai. Uttaradike Abhimani Devata Mahakuberam Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata and once again hold some akshata in your hand. Om Tamisha Anam Jagadastasvastim Diyamavahe Homahe Vadayam Posha Noyata Veda Samasakrate Rakshita Payradadasvastaye. Ishana Dike Abhimani Devata Ishana Rudram Abhayankara Indra Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata to the mandapam. Now we are going to invoke the Panchalokapalakas. So they are the most pradhana devatas. So now we are going to invoke them. If you have a chitrapata in front of you, you can look after it. If you don't have, just offer the akshata to the kalasham. Hold some akshata or flower petals in your hand. Now we are going to invoke Lord Brahma in the east direction. Om Brahma Jnanam Pradhamam Gurastat Visevata Suracho Veda Avaha Samudniya Upama Asya Vishta Sataschayo Nimasasya Vyaha. Bhurbhavat, repeat after me. Bhurbhava Swaha Purva Dike Abhimani Devata Brahmanam Lokapalakam Asmin Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Now offer the akshata. Once again hold some flower petals or akshata in your hand. Now we are going to invoke Lokapalaka Mahaganapati. Om Nishasi Ida Ganapate Ganeshutama Ahur Vipratamam Kavina Narde Tatkriyate Kinchanare Mahamarkam Madhavan Chitramarcha. Repeat after me. Bhurbhava Swaha Lokapalakam Vinayakam Mantapamadye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata. Once again hold some akshata in your hand. Now we are going to invoke Lokapalaka Rudradeva. Om Mano Mahantamutamano Arbakam Mano Aksharam Udamano Mano Vade Pitaram Modamataram Priyamanastanu Rudrare Rishaha. Repeat after me. Bhurbhava Swaha Lokapalakam Sadashiva Rudram Antapasya Paschima Digbage Avahayami Stapayami Pujayami. Offer the akshata. Now once again hold some akshata in your hand. Now we are going to invoke Lord Lokapalaka Vishnu.
ओम इरा आवते देदमतेः भूतं सो यवसने मरुते दशस्य व्यस्तब्दारोदासी विश्वमिन्वेदादर्तः पृथिवीमपितो ओम युकैः रिपीट आफ्टर मी भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः लोकपालकं महाविष्णुं मण्टपस्य दक्षिण दिग्भागे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the Akshata. Once again, hold some Akshata. Now we are going to invoke Lokapalaki Durga Devi. Om Jatave Edase Sunavam Somamrati Yato Nidahati Vedaha Sanah Parshadati Durgadi Vishwa Anavev Sindhum Drita Tegnihi. Repeat after me. Bhurbhavaswaha Lokapalaki Durga Devi Mantapasya Uttara Digbhage Avahayami Stapayami Pujayami. Avahita Devatabhyo Namo Namaha Dhyanavahanani Shodashopachara Pujanancha Karishye. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि आभरणानि समर्पयामि गन्धाक्षता परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपः ओम वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता उद्दीप्यस्वजातवेदो अपघ्निरोति मम पशोदुश्चमक्यमावह जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि नैवेद्यार्थे पक्वा कदलीफलान्निवेदनं निवेदयामि ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अन्तःशर्गभूतेषु गुहायां सर्वतोमुखः त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारः त्वं विष्णुपुरुषोत्परः. If you have a fruits in front of you, you can offer to Lord Navagrahas and Lokapalakas as well as Digpalakas. Om Pranaya Swaha, Om Apanaya Swaha, Om Yanaya Swaha, Om Udanaya Swaha, Om Samanaya Swaha, Om Brahmane Swaha. Hasta Prakshalam Samarpayami, Pada Prakshalam Samarpayami, Mukha Prakshalam Samarpayami, Pradosham Samarpayami, Suvarna Pushpadakshinanjalim Samarpayami, Mangalam Nirajanancha Karishye. Now priest is going to do the arati. Please pray yourself. Om Samsrashtam Dhanam Ubhayam Samakritam Asmabhyam Dattam Purunascha Manyoh Dhyam Dada Anatraye Shatra Vaspara Ajitaso Tamrayantam Mo. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan Ki Jai. Dear devotees, now we are going to do the Palapanchamrita Abhishekam for Lord Satyanarayana Swami. If you are willing to do the Abhishekam in your home, you can do it by looking at the priest. If you don't have the Panchamritam, just you can watch us doing and get the blessings from Lord Satyanarayana Swami. Priest will be doing the Abhishekam. Please pray yourself. Om Sahasrashir Siddhi Shodasarachasya Suktasya Narayana Shiyandya Tattachandaha Parama Purusho Devata Abhishek Palapanchamrita Abhisheke Vinyogaha Om Sahasrashirasha Prosha Sahasrasha Sahasrapa Sabhumim Vishruto Vritvatyatishtaddashangulam Purosha Evedagum Sarvam Yadbhutanye Chabamyam Utamritatvashesha Anoyadanne Enatirohati Om Apyaya Sukame Ekate Vishwataswamavrishniyam Bhavavajasya Sangate Bhurvaswaha Samasameda Viravenkata Satyanarayana Swaminam Kshireణ snapayami. Om Nadikrano Akarisham Jitnorasvasya Vajinaha Suravino Mukha Akaratana Ayogum Shitarishate Bhurbhavaswaha Samasameta Viravenkata Satyanarayana Swami Namo Namaha Tadisnanam Samarpayami. Om Agna Ayo Om Shipavasa Aso Jamisham Tanaha Areva Adasvaduchana Samasameta Viravenkata Satyanarayana Swami Namo Namaha Ajyasnanam Samarpayami. Om Ajyasnanam Samarpayami. Om Madhuvatrasayate Madhuksharanti Sindamaha Madhviyam Santoshade Madhurastamutoshasi Madhumatparti Vadumrajaha Madhujyaurastanah Pita Madhumanno Vanaspatir Madhumagam Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunah
मधु 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 भूर्भुवस्वः रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि स्वादुक्त्वा वसदिव्याय जन्माने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम् अदाभ्यः भूर्भुवस्वः रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः शर्करास्नानं समर्पयामि ॐ आपोहिष्टामायोपवस्थाना ऊर्जेदादातनः महीरणाय चक्षासे योपश्यवतामोर्गस्तस्या बाजे देहनाः कुशतीरेव मातराः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्माता आपो जनयाता जनः भूर्भुवस्वः रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं च करिष्ये ॐ संसृष्टं धनामुभयं समाचरतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्यः प्रियं ददानादाय शत्रावस्पराजितासु अपमलायन्ताम् ॐ जय बोलो रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय. Namaste dear devotees. Now priest is going to take care of the Satyanarayana Swami. So in the meantime, if you know any bhajans, you can sing the bhajans. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್. ಓಕೆ. So after the Panchamrita Abhishekam, we are going to do the Ashtotra Shatanama Archana for Lord Satyanarayana Swami. So if you have a book, get yourself prepared for doing the Archana. All of us will be going to chant together. So while chanting the Ashtotra Shatanama Archana, you can hold Akshata or flower petals in your hand. So at the end of the Archana, you can offer that flower petals or Akshata in the divine feet of Lord Satyanarayana Swami. So if you have a book in front of you, you can take the Ashtotra Shatanamavali. If you don't have, you can Google it in your phone. So as per preferable languages, all of us will be chanting together as I say. So just take some flower petals or Akshata in your hand. Let us chant together. Hold some flower petals in your hand. Now we are going to do the chanting. Om Kritasya Abhisheka Satpunyata Siddhartham Rama Sameta Veeravenkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Ashtotra Shatanama Cha Karishye. Om Shri Satyadevaya Namaha. Om Shri Satya Atmane Namaha. Om Shri Satya Bhutaya Namaha. Om Shri Satya Purushaya Namaha. Om Shri Satyanathaaya Namaha.
ओम श्री सत्यसाक्षिणे नमः ओम श्री सत्ययोगाय नमः ओम श्री सत्यज्ञानाय नमः ओम श्री सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम श्री सत्यनिधये नमः ओम श्री सत्यसंभवाय नमः ओम श्री सत्यप्रभवे नमः ओम श्री सत्य ईश्वराय नमः ओम श्री सत्यकर्मणे नमः ओम श्री सत्यपवित्राय नमः ओम श्री सत्यमंगलाय नमः ओम श्री सत्यगर्भाय नमः ओम श्री सत्यप्रजापतये नमः ओम श्री सत्यविक्रमाय नमः ओम श्री सत्यसिद्धाय नमः ओम श्री सत्य अच्युताय नमः ओम श्री सत्यवीराय नमः ओम श्री सत्यबोधाय नमः ओम श्री सत्यधर्माय नमः ओम श्री सत्य अग्रजाय नमः ओम श्री सत्यसंतुष्टाय नमः ओम श्री सत्यवराहाय नमः ओम श्री सत्यपरायणाय नमः ओम श्री सत्यपूर्णाय नमः ओम श्री सत्य औषधाय नमः ओम श्री सत्यशाश्वताय नमः ओम श्री सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम श्री सत्यविभवे नमः ओम श्री सत्यज्येष्ठाय नमः ओम श्री सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम श्री सत्यविक्रमिणे नमः ओम श्री सत्यमेधाय नमः ओम श्री सत्य अधीशाय नमः ओम श्री सत्यक्रतवे नमः ओम श्री सत्यकालाय नमः ओम श्री सत्यवत्सलाय नमः ओम श्री सत्यवसवे नमः ओम श्री सत्यमेघाय नमः ओम श्री सत्यरुद्राय नमः ओम श्री सत्यब्रह्मणे नमः ओम श्री सत्य अमृताय नमः ओम श्री सत्यवेदांगाय नमः ओम श्री सत्यचतुरात्मने नमः ओम श्री सत्यभोक्त्रे नमः ओम श्री सत्यशुचये नमः ओम श्री सत्य आर्जिताय नमः ओम श्री सत्य इंद्राय नमः ओम श्री सत्य संग्रहाय नमः ओम श्री सत्य स्वर्गाय नमः ओम श्री सत्य नियमाय नमः ओम श्री सत्य मेधाय नमः ओम श्री सत्य वेद्याय नमः ओम श्री सत्य पीयूषाय नमः ओम श्री सत्य मायाय नमः ओम श्री सत्य मोहाय नमः ओम श्री सत्य सुरानंदाय नमः ओम श्री सत्य सागराय नमः ओम श्री सत्य तपसे नमः ओम श्री सत्य सिंहाय नमः ओम श्री सत्य मृगाय नमः ओम श्री सत्य लोकपालकाय नमः ओम श्री सत्य स्थिताय नमः ओम श्री सत्य औषधाय नमः ओम श्री सत्य दिक्पालकाय नमः ओम श्री सत्य धनुर्धराय नमः ओम श्री सत्य अंबुजाय नमः ओम श्री सत्य काव्याय नमः ओम श्री सत्य गुरवे नमः ओम श्री सत्य न्यायाय नमः ओम श्री सत्य साक्षिणे नमः ओम श्री सत्य संवृताय नमः ओम श्री सत्य संप्रदाय नमः ओम श्री सत्य वन्नये नमः ओम श्री सत्य वायुवे नमः ओम श्री सत्य शिखराय नमः ओम श्री सत्य आनंदाय नमः ओम श्री सत्य अधिराजाय नमः ओम श्री सत्य श्रीपादाय नमः ओम श्री सत्य गुह्याय नमः ओम श्री सत्य उदराय नमः ओम श्री सत्य हृदयाय नमः ओम श्री सत्य कमलाय नमः ओम श्री सत्य नादाय नमः ओम श्री सत्य हस्ताय नमः ओम श्री सत्य बाहवे नमः ओम श्री सत्य मुख्याय नमः ओम श्री सत्य जिह्वाय नमः ओम श्री सत्य दंष्ट्राय नमः ओम श्री सत्य नासिकाय नमः ओम श्री सत्य श्रोत्राय नमः ओम श्री सत्य चक्षुषे नमः ओम श्री सत्य शीर्षे नमः ओम श्री सत्य मुकुटाय नमः ओम श्री सत्य अंबराय नमः ओम श्री सत्य आभरणाय नमः ओम श्री सत्य आयुधाय नमः ओम श्री सत्य श्रीवल्लभाय नमः ओम श्री सत्य गुप्ताय नमः ओम श्री सत्य पुष्कराक्षाय नमः ओम श्री सत्य दृढ़ाय नमः ओम श्री सत्य भामारताय नमः ओम श्री सत्य ग्रहरूपिणे नमः ओम श्री सत्य प्रहरणायुधाय नमः आवाहित रमा समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः चरणारविन्दयोः सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणाञ्जलिं समर्पयामि अत लक्ष्मी अर्चनं च करिष्ये Om. Now we are going to do the Lakshmi Ashtotra Shatanama Archana. If you want to get some Kunkuma as blessings, you can do the Kunkuma Archana for Goddess Lakshmi Devati, Lakshmi Devi. So now once again we are going to chant together. So Prish is doing the Kunkuma Archana for Lakshmi Devi. Om Prakrtyai Namaha, Om Vikrityai Namaha, Om Vidyayai Namaha, Om Sarvabhuta Hitapradayai Namaha, Om Shraddhayai Namaha, Om Vibhutyai Namaha, Om Surabhyai Namaha, Om Paramatmikayai Namaha, Om Vache Namaha, Om Padmalayai Namaha, Om Padmayai Namaha, Om Shuchaye Namaha, Om Swahayai Namaha, Om Swadhayai Namaha, Om Sudhayai Namaha, Om Dhamyayai Namaha, Om Hiranmayai Namaha, Om Lakshmi Namaha, Om Nityapushtaye Namaha, Om Vibhavarye Namaha, Om Aditye Namaha, Om Dityye Namaha, Om Deeptaye Namaha, Om Vasudaye Namaha, Om Vasudharinye Namaha, Om Kamalaye Namaha, Om Kantaye Namaha, Om Kshamaye Namaha, Om Kshiroda Sambhavaye Namaha, Om Anugrahpradaye Namaha, Om Buddhaye Namaha, Om Anagaye Namaha, Harivallavaye Namaha, Ashokaye Namaha, Amritaye Namaha, Deeptaye Namaha,
लोकशोकविनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाये नमः करुणाये नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाये नमः पद्महस्ताये नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मोद्भवाये नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाये नमः रमाये नमः पद्ममालाधराये नमः देव्यै नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाये नमः सुप्रसन्नाये नमः प्रसादाभिमुख्ये नमः प्रभाये नमः चन्द्रवदनाये नमः चन्द्राये नमः चन्द्रसहोदर्ये नमः चतुर्भुजाये नमः चन्द्ररूपाये नमः इन्दिराये नमः इन्दुशीतलाये नमः आह्लादजनन्ये नमः पुष्ट्यै नमः शिवाये नमः शिवङ्कर्ये नमः सत्यै नमः विमलाये नमः विश्वजनन्ये नमः तुष्ट्यै नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रीतिपुष्करिण्ये नमः शान्ताये नमः शुक्लमाल्याम्बराये नमः श्रियै नमः भास्कर्ये नमः बिल्वनिलयाये नमः वरारोहाये नमः यशस्विन्ये नमः वसुन्धराये नमः उदाराङ्गाये नमः हरिण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यकर्ये नमः सिद्धये नमः स्तरणसौम्याये नमः शुभप्रदाये नमः नृपवेश्मगतानन्दाये नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदाये नमः शुभाये नमः हिरण्यप्राकाराये नमः समुद्रतनयाये नमः जयाये नमः मङ्गलदेव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः विष्णुपत्न्यै नमः प्रसन्नाक्षै नमः नारायणसमाश्रितायै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः कुङ्कुमार्चनानि समर्पयामि. Dear devotees, now is the Katha Shravanam. Now our manager will be reading all the chapters. If you want to read, you can read with yourself or you can just hear. Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta replied, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring about salvation, Narada travelled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can get rid of itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Pooja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressing Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, flowers, ghee, milk, yogurt, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is over,
he must read the Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment to one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, the puja brings contentment. जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय. Chapter 2. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all observed the Satyanarayana puja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefit." Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed only on one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, yogurt and honey and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Narayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Suta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis then addressed Maharishi Suta, "O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Suta continued, "One day when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who was bestowed with Lord Narayana's grace, spoke. This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes the Ratha will get the riches, all the riches. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered and went away. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Ratha with whatever he was going to make by selling the firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, milk, ghee, yogurt, honey and wheat flour and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortable and attained moksha. जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय. Chapter 3. Maharishi Suta continued, "O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana puja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped by his boat, got off and addressed the king humbly. "O king, would you tell me what are you doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the Vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy and told his wife Leelavati that they should perform the Satyanarayana puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja
after the child was born. Then by divine grace, sadhus were conceived, and in due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day Lilavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the loot near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also had their merchandise confiscated. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Kalavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vratha herself. She collected her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter was frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your fate. But there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts and bade them goodbye. Jai Bolo Jai Bolo Satyanarayana Satyanarayana Swami Swami Bhagavan Bhagavan ki Jai. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God,
O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants joyfully sailed homeward. On reaching home, their hometown, they sent a messenger to their wives, informing them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Pooja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the sheep and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Narayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband. So I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return. On hearing this, Kalavati rushed home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband in the boat. Sadhu then returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadhvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to cowherds, prostrated himself before the Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to fulfillment of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Suta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective abodes. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Om Amahitarama Sameda Veravendra Satyanarayana Swamine Namo Namaha Dupamagrapayami. Om Vanaspatra Sotpanno Gandhajo Dupottamaha Agreya Sarvadevanam Dupoyam Pratigrakyatam Jyote Shuklasya Tejascha Devanam Satamriyaha Prabhakaro Mahatejo Depoyam Pratigrakyatam Avahitarama Sameda Veravendra Satyanarayana Swamine Namo Namaha Dupamagrapayami Pratyaksha Deepam Sandarshayami Naivedyarte. Dear devotees, if you have done the Sapada Bhaksham, so you can offer it to Lord Satyanarayana Swami. So if you have fruits also, you can offer it to Lord Satyanarayana Swami. Take some water, sprinkle on the fruits or Sapada Bhaksham. So put on flower petals inside the fruits or Sapada bowl and offer it to Lord Satyanarayana Swami. Avahitarama Sameda Veravendra Satyanarayana Swami Namo Namaha. Annani Payasamukani Vishuddhimante Snigdhani Satkatali Modaka Sanyutani Sarpirakudaira Madhubirartamani Puyaha Swamin Samarpakita Nitamo Namaste Rana Yeswaha Apana Yeswaha Avyana Yeswaha Audana Yeswaha Samana Yeswaha Brahmana Yeswaha Hasta Prakshalam Samarpayami Pada Prakshalam Samarpayami Vaka Prakshalam Samarpayami Gandosham Samarpayami Suvarna Pushpa Dakshinanjalim Chakarishyem. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavahan Pushpavan Bhavate Chandramava Apam Pushpam
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो ओत्सनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आवाहितरमा समेत वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः चरणारविन्दयोः सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणाञ्जलिं समर्पयामि ॐ दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः कलिन्द्राग्ने कृणतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमोदन्तु यज्ञम् पश्चात् पुरस्तादवयन्नो अस्तु वायुस्ताकुम् अग्रे प्रमुनोक्त देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः राजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय राजाय नमः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेक्षसे समुषद्भिरजायत आवाय सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः मंगलनीराजनं च करिष्ये. Dear devotees, please pray to Lord Satyanarayana Swami. Now we are going to do the Arati. If you are willing to give the Arati, you can give it us also. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न कोई आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा
श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम संसृष्टं रामभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्ताम्बरो नस्तमन्यः धियं ददा अनार्दाय शत्रावस्त्रा आदितासो अपनिलायन्ताम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। पुनः पूजा किं च कर्म करिष्ये तत्पूर्वम् आत्मप्रदक्षिण नमस्कारं च करिष्ये। Dear devotees, hold some akshata in your hand. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवान्। त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। आवाहित रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। Do the namaskaram and please be seated. पुनः पूजा किं च कर्म करिष्ये। hold some akshata in your hand. पुनः पूजा किं च कर्म करिष्ये। आवाहित रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। धूपदीपनैवेद्यं च समर्पयामि। Repeat after me. कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अनेन एतावत् काल पर्यन्तं मया आचरित रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः कल्पोक्त पूजनेन भगवान् सत्यनारायण स्वामी प्रीयतां। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Take some akshata once again. ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पदे देवयन्तस्त्वेमहे उपप्रयन्तो मरुतस्तु दानवः इन्द्रप्राशुर्भवास च। आवाहित रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। लाभाय क्षेमाय पुनः आगमनाय च यथा यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि। Just shake a kalasham a little bit so that we are going to invoke the devotee respective above. So those prasadam you can have it. If you did the kunkumarchana, take some kunkuma and put on your forehead. So if you have a flower, all the ladies you can have it. So men's you can have some akshata as a blessings from Lord Satyanarayana Swami. Namaste. Thank you. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। हरि ओम।